Deepika, and I thank you, ma'am. So I will be your program moderator this evening on this absolutely phenomenal, exciting, enlightening, and full of information session. Uh, it's absolute honor and privilege to have the opportunity to introduce us, our esteemed speakers for tonight. I'm extremely fortunate that I have known them day in and day out for the last 12 years now. And each conversation with each one of them is extremely enlightening in one way or the other. Things that Farooq has been, telling us, sharing us, guiding us, saying to us for last more than a decade. It all makes sense now, but it's better. They say, it's better late than never. I'm glad that finally we gave into listening to him every other day. You will be first hearing from the man himself, Farooq Tarapur, an ex-Indian Navy officer, and also a world champion in the field of yachting. He has represented India for over 40 years on the international platform. He is the recipient of the prestigious Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. He is the biggest testimony that, age is just a number. He lives healthy, he talks health, he knows in and out of nutrition, and he's one man army that can help you reverse any possible lifestyle disease that you or your family members are facing or going through. I am a living example of that. He's helped me big time and a couple of others. And he will certainly introduce our second esteemed guest member, a corporate, a corporate guy by background and profession. I won't dig into too much of Farooq's time. I'll hand over the mic to him for him to take things forward and evening forward. Yes, we will be learning about gut health, which is one of our all-time favorite topic. So over to you, Farooq, and we really look forward to listening to your bites tonight. Thank you, Deepika. And good evening, everyone, and welcome to this exciting Monday session. I hope you all had a light dinner. Okay, not too much of protein, not too much of simple carbs, not too much of fat. Okay, and I hope you've done your exercise after dinner. Because if there is one change that is really required in the Indian society, to ensure that you have good health is to have an early dinner, do a little brisk walk. It doesn't matter, even if it is a small brisk walk, even if it is 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, but do something. I've often said this on this platform that the worst thing that you can do for your health is to have a heavy dinner late at night and then go to sleep, right? That is the worst thing you can do. And the more we are doing, and all this is all, keeping with this whole principle of ensuring that you have the right morning nutrition, you're keeping your gut friendly, ensuring the right amount of good bacteria versus bad bacteria. And all this, I think the start of this journey is from, the food that you're putting on the plate at dinner. Of course, everything else also matters. But I personally feel, and from the experiences that I've seen and a kind of food habits that people have in India, I've been noticing that if somebody were to ask me and say, okay, name just one thing I want to change. And I would say, have an early dinner, okay, before the sun goes down. Ensure that the dinner is correct. It has got the right stuff in it, It's not loaded with too much of protein or carbs or fat, okay? And you're doing some form of a exercise, a brisk walk, stretching exercises, and you're sort of winding down. And you spend at least, 2 to 3 hours, before you hit the sack. As I said, the worst thing you can do is have a heavy meal and go to sleep. I often see when people go to parties, and it's like sometimes the dinner starts at midnight. It doesn't make any sense that even though if you have the best food on the table, the most expensive food on the table,
it's going to do a massive damage to your entire gut reset. I have seen in many European countries, places in Scandinavia and all, they have late night parties, but they all have their dinner early and then come to late night parties, okay, where they don't eat. So the principle behind this gut reset is very simple, that you cannot have a heavy dinner late at night and go to sleep. It's going to damage your gut. The more research we are doing into this subject, the more we are realizing as to the importance of having a good gut, the importance of having the right amount of good bacteria as compared to the bad bacteria. And this is a subject that is taken very rightly, or probably one is not even aware as to why is this so important. And the more we are digging into it and the more research we are reading, we are realizing that the gut has, connection everywhere. It's got connection with various kind of lifestyle diseases. It has connection with your cardiac problems. It has connection with your high blood pressure problems. Got connection with your hypertension, depression. It's got connection with sugar control. It's got connection with Parkinson disease. It's got connection with dementia. It's got connection with Alzheimer's. All this is connected. And when one goes to look at it, in a scientific way, one is saying, look, why is this so important? Just think about your body, as a really expensive vehicle. And if the vehicle is not serviced on a regular basis, irrespective of the quality of the good oil or the fuel that you put in, you're not going to get good efficiency. So imagine if your gut is not good and the percentage of the good bacteria is not 85%. Okay, how does it matter even if you're eating the best quality food and the best quality supplements? Because that is going to have a minimal impact on your overall health. Because if your body is not efficient, how are the nutrients going to reach the extreme ends of your body, for the body to be healthy? So I hope you take this thing seriously. And today you're going to learn, on this subject from Raj, who probably had one of the worst food habits, especially because of his job earlier in the corporate sector, and the kind of excessive stress and the strain they had. And he's seen both sides of life. He's seen what it is to have a healthy gut and how good the life is and how good the health is. And he's seen also what is it to have a bad gut and how badly you can be impacted. So listen to Raj very carefully, because what he has to say might have significant impact on your overall health. Thank you. And over to you, Raj. Thank you, Farooq. Thank you for that valuable information and especially letting us know the importance of this. Now, I have listened to this many a times earlier also from Farooq, and I used to think वो ओलंपियन है, ये उनकी थियरी है, हम तो कॉर्पोरेट वाले हैं, रात के 2 बजे घर लौट के आते हैं. I mean, that used to be my life. And the whole understanding of health was very simple. If you're not sick, if I'm not sick, I'm healthy. Now, this used to be my definition. But thankfully, through this program, like now we understand. And the most best part that I love about this program is it helps for people like me to understand and create the right set of health goals. So health goal bhi hona bahut important hai, that how do you create the right health goal. So gut evening, everybody. And how is your gut feeling today? Now, see, why do I always quote myself? Because मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे समझ में आ गया तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. Because of my job pressure, everything. So I always put myself into the shoes of a new person कि आप क्या expect कर रहे हो इस program से. So gut health इतना important क्यों है? And why is it said that gut is the most, like, this is the second brain to the human body? सो इतना इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है. सो अगर आज के प्रोग्राम में अगर आपने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, सिर्फ एक ही लाइन लेके चले गए, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड गट हेल्थ, एंड दैट गट फीलिंग आल्सो कम्स फ्रॉम हियर ओनली.
अभी कुछ दिन पहले अभी 2 दिन पहले नवरात्रि खत्म हुई है, एंड आप देखोगे दैट व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ नवरात्रि इन योर गट हेल्थ। सो ये सब जो रिलीजियस चीजें जो बनाई गई है उसका भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक कनेक्शन है, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी टुडे। So, you know, the role of gut. So, this is how the food moves in our body. So, on an average, it has been seen that 7 से 8 दिन लगते हैं जो भी खाना हम कंज्यूम करते हैं, by the time it flushes from our body out. So, you know, so that overall the average time that it takes is something around 7 to 8 days. एंड इसीलिए जो नवरात्रि जो होती है, और स्पेशली नाउ जब सीजन चेंज होता है, इसकी बहुत बड़ी साइंटिफिक रेलेवेंस भी है इसके साथ में। सो गट का रोल क्या है? इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सिंपल वंस। सो गट में ये सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू होता है। एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, गट माइक्रोबायोटा हाउसिंग एंड बैलेंस, एंड हार्मोन प्रोडक्शन। तो अगर आप ये देखिए, ये सारी चीज होती है। नाउ मोस्ट ऑफ अस, हमारा जो गट को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है वो सिर्फ सिर्फ ये रहता है कि यू नो इफ यू आर हैविंग अ गुड मोशन इन द मॉर्निंग योर गट इज फाइन, या बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन है, गट को कहीं ना कहीं हम सिर्फ इतने पे ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। बट इफ यू सी आफ्टर द टुडेज प्रोग्राम यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड हाउ, जो फरूक अभी बता रहे थे कि यू नेम एनी डिजीज, कहीं ना कहीं उसकी जो ओरिजिन है वो आपके गट हेल्थ से शुरू होती है। नाउ व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा? सिंपल टर्म्स में गट माइक्रोबायोटा, आपके बॉडी में जो गट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। एंड अगर ये देखिए, आई मीन इट इज टू द ट्यून ऑफ टोटलिंग रफली अराउंड 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोम्स एंड 5,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है जो आपके गट में ये है जो काम कर रही है। एंड इसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 किलोग्राम्स। सो इतना बड़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम गट कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर है और जो ये फंक्शन कर रहा है। सो इमेजिन 100 ट्रिलियन एम्प्लॉयज आर वर्किंग डे एंड डे आउट। आप जो फूड ले रहे हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है, इतने सारे जो माइक्रोबायोट्स है ये हमारे गट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। नाउ द गट माइक्रोबायोटा 5 मेन फंक्शंस है। प्रमोट्स डाइजेशन बाय फैसिलिटेटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट में मैं आपको इस पे सिंपल सिंपल टर्म्स में बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। हेल्प्स द बॉडी टू ट्रैक द फंक्शन प्रॉपरली, creates a barrier against pathogens and toxins, very very important one, and plays a defensive role in the development of the immune system। so आपकी immunity पे gut health का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, and produce beneficial metabolites, short chain fatty acids। आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लीजिए और अक्सर अगर आप उसको सुनोगे कि अगर वो बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गट हेल्थ। एंड गट में अगर आप देखोगे द चिप्स कंजम्पशन, द बिस्किट्स एंड अदर जो मार्केट के आइटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, एंड दैट्स द इम्यूनिटी का कोरिलेशन विद द गट हेल्थ, आई मीन दैट्स देयर। सो now this is the gut microbiome। now normally जो हमारे बॉडी में होता है, now there is something called bacteriorides। ये this is like a good bacteria, and जो firmicutes होता है, this is like the bad bacteria। so this is what's there inside our gut। normally जो इसका परसेंटेज होना चाहिए, it is like the good bacteria should be around 85% and the bad bacteria should be around 15%। ये रेशियो है जो होनी चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में। now good bacteria क्या करता है? anything positive that you can think of, be it maintaining a healthy weight, be it your good health, good cardio health, anything that you can think of, ये good bacteria control करता है। and जो bad bacteria होता है, which is known as firmicutes, ये जो होता है, it is responsible for weight gain, diabetes, liver issues, स्किन रिलेटेड चैलेंजेस। यू नो आप किसी का स्किन देख लीजिए एंड बहुत सारे पिंपल और स्किन रिलेटेड इश्यू होंगे, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस बैड बैक्टीरिया। नाउ एवरेज बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये सारी चीजों के वजह से ये जो है, नाउ व्हाट शुड हैव बीन 85% इज नाउ 15%, एंड व्हाट शुड हैव बीन 15% हैज गॉन अप टू 85%। नाउ थ्रू दिस प्रोग्राम यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू बैलेंस और ब्रिंग इट बैक। एंड द गुड न्यूज इज, यू नो, ये सारी चीजें 9 दिन के अंदर की जा सकती है। इसीलिए आपके जो हेल्थ बडीज हैं वो कुछ लोग को पर्टिकुलरली रिकमेंड करेंगे दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग फॉर अ गट रीसेट। एंड ये जो नवरात्रि का जो 9 दिन होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से गट रीसेट से आप इसको रिलेट कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं इसकी जो रिलेवेंस है वो इसी से मैच, मतलब यही चीज है जो होती है। इसीलिए जो आपके हेल्थ बडीज है, दे विल रिकमेंड सम ऑफ द पीपल दैट यू शुड गो फॉर अ 9 डे 10 डे गट रीसेट प्रोग्राम।
एंड गट रीसेट प्रोग्राम का मतलब यही है कि जब आप अपने फूड चेंजेस करोगे, सो जो बैड बैक्टीरिया उसको आप कम कर रहे हो और जो गुड बैक्टीरिया आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो. एंड द गुड न्यूज इज यू कैन फील द डिफरेंस विद इन लाइक 2 days. विद इन 2 days यू कैन मेक आउट द डिफरेंस. 2 to 3 days में आप डिफरेंस देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस इट ब्रिंग्स टू योर बॉडी व्हेन द गुड बैक्टीरिया इज गोइंग अप एंड द बैड बैक्टीरिया इज गोइंग डाउन. So this is how it needs to be. Now, skin related issue, immunity, mood, stress, sleep, weight, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, क्रेविंग्स फॉर फूड. बहुत बार हमें ये लगता है कि हम रात को देर तक जॉब कर रहे तो फूड क्रेविंग होती है. अगर आप सॉल्ट खा रहे हो तो स्वीट क्रेविंग होगी, स्वीट खा रहे हो तो सॉल्ट क्रेविंग होगी. ये जो क्रेविंग्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गुड एंड द बैड बैक्टीरिया. जॉइंट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इशू, ब्रेन रिलेटेड इशू, स्किन, एवरीथिंग इज बीन यहीं से कंट्रोल होता है ये चीज. सो कितना इंपॉर्टेंट है टू नो दैट हाउ टू मेंटेन अ गुड बैक्टीरिया इन योर गट, right? Now these are some of the correlation between what is the difference between a good gut versus a bad gut. Now अगर आप एक unhealthy gut को देखोगे तो आप food sensitive रहोगे, right? What is that called? ये tolerance, वो tolerance, milk tolerance, wheat tolerance, lactose intolerant, ये सारी चीजें जो आप सुन रहे हो ये कहीं ना कहीं गट हेल्थ से शुरू होता है. ना आज की तारीख में स्पेशली इन द यंगर किड्स ये बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहा है. बट व्हाट पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग कि ये उनके प्रैक्टिसेस, चॉइसेस के वजह से ये चीज हो रही है. एंड नॉट, दिस इज नॉट समथिंग लाइक अ मेडिकल चैलेंज, दिस इज समथिंग लाइक यू नीड टू बिल्ड एज अ हैबिट. सो फूड सेंसिटिव इज bloat after every meal, inconsistent stools and excess gas, feeling better not eating, right? Skin imbalance, sleep disruptions, like I mean sleep disorders, constant fatigue, टायर्डनेस वाली जो फीलिंग आती है, मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम. ये है कुछ अनहेल्दी गट के एग्जांपल जो क्या होता है. ना अगर आप हेल्दी गट देखेंगे तो प्रॉब्ली यू कैन टॉलरेट मोस्ट ऑफ द फूड्स, limited or absolutely no bloating, consistent solid stools, feel fueled after eating, skin is glowing, sleep through the night, you get a very sound sleep, energy is in energy is consistent, which means कि आपको वो बार बार क्रेविंग की अर्ज नहीं होती है. लेस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, लेस इलनेस एंड सीजनल एलर्जीज, ये आपको नहीं होता है. नाउ हाउ डज आवर गट कॉम्प्रोमाइज, हर वो चीज जो फरूक बता रहे थे जो हमें करना चाहिए, जब हम वो नहीं करते हैं तो हमारा गट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. और जब गट कॉम्प्रोमाइज होएगा तो ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, कैफीन, ऑयल, सैचुरेटेड फैट्स, पुअर स्लीप, लाइफस्टाइल, मीट, इसके ऊपर अलग से एक सब्जेक्ट है कि शुड वी टेक नॉनवेज और शुडंट वी टेक नॉनवेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारी चीजें हैं जिससे हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो गट हेल्थ है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. नाउ व्हाट आर द 4 pillars टू सपोर्ट अ हेल्दी गट? First is healthy food practices, right? Make the right choices, eat seasonal things, yeah, right? Chocolate खाना है और एक अगर एप्पल खाना है तो प्रिफर एप्पल ओवर अ चॉकलेट, एक्सरसाइज करिए. Lifestyle, stress or sleep management, and supplementation is the most important thing. Now, why supplementation becomes very, very important? Because हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो फूड से मिल रहा होता तो शायद इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती. बट आई शुडंट बी सेइंग थैंक्स टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बिकॉज वो अपना तो फायदा कर रहे हैं बट हम सबका नुकसान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ द सीड में जो जीन मॉडिफाई कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ द यूरिया दैट दे आर पुटिंग इन, द बॉडी इज नॉट गेटिंग द राइट सेट ऑफ नरिशमेंट दैट द बॉडी नीड्स, एंड हेंस देयर इज दिस गैप. And because of this gap, this is what is called as the nutritional deficiency, and this is what causes all the lifestyle challenges along with जब हम ये बाकी सारी चीजों को नहीं करते हैं. So nutrition gap plus all these things that we don't do causes the lifestyle challenges. And imagine अगर कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज यहाँ से शुरू की हो रही है, सो आप कितना भी मेडिसिन खा लीजिए, किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, वो उसको नहीं रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ये आप शुरू कर रहे हो. सो एक मेडिसिन का पिल उसको नहीं सब्सटीट्यूट कर सकता. Now, what do we need to remove and replace? Answer is very simple. Anything that is made in a factory, we should replace. We shouldn't be eating that, right? हर चीज जो फैक्ट्री में बन के आ रही है, और उसको आप रिप्लेस किन चीजों से कर सकते हो? जो चीजें होममेड है, होम कुक्ड है, ऑर्गेनिक है, फ्रूट्स प्लांट बेस्ड है, इन चीजों से अगर आप रिप्लेस करेंगे, सो आप उसको देखेंगे दैट इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर गट हेल्थ. Healthier tips for a healthy gut, eat whole grains, good source of fibers and complex carbs that acts as prebiotics.
अक्सर मैंने देखा है, अभी रिसेंटली आई वाज इन मुंबई एंड आई सॉ दैट अ यंग किड बट हु वाज ओवरवेट, और जब वो मार्केट से आ रहा था उसके दोनों हाथ में दो दो पैकेट मैगी थे। नाउ आज से अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं देखा होता तो मेरा मेरा आंसर ये होता है क्या फर्क पड़ता है, उसको खाने दो, उसको जो भी खाना है। आई मीन बॉडी में जाना चाहिए। बट जब आप होल ग्रेन चीजें खाते हो, जब आप प्रोसेस चीज नहीं खाते हो, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर गट हेल्थ। सो ट्राइंग एंड टेक होल ग्रेन्स। नो, नॉर्मली अगर आप बहुत सारी जगहों में जाओगे, आज भी मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ पीपल ईट ज्वार की रोटी, बाकरी एंड ऑल दो स्टफ, बिकॉज होल ग्रेन कॉम्प्लेक्स कार्ब इज more better than eating a simple carb. Plant based food, because of the social media, our relatives, we travel abroad and here and there, but ये एक अलग अलग इस पे सेशन है। जब आप देखेंगे तो जो हमारे माइक्रोबायोम्स है, स्पेशली इंडियंस के, हम डिजाइन किए गए हैं प्लांट बेस्ड फूड खाने के लिए। हमारा जो हार्ट का साइज है, हमारे गट में जो बैक्टीरियाज है, दे आर डिजाइन फॉर अ प्लांट बेस्ड फूड। वी आर नॉट डिजाइन फॉर अ नॉन वेजिटेरियन और अ मीट रिलेटेड स्टफ। सो हेंस प्लांट बेस्ड फूड आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लेस एसिडिक, यानी आपकी बॉडी को अल्कलाइन बना देते हैं, और जब बॉडी अल्कलाइन स्टेट में है आप बीमार नहीं पड़ोगे। सो मैजिक ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नहीं समझ में आता था कि क्यों लंच में छाछ लेना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोबायोटिक होता है, जो फर्मेंटेशन होता है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। एंड अवॉइड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल। Try and do a survey of people who drink alcohol versus people who don't drink alcohol, and what is their overall thing, and you'll find a significant difference between this. Drinks like alcohol are found to be causing uh, uh, a lot of challenges related to bacteria, because ये नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं जो आपकी गट हेल्थ के ऊपर, एंड जो गुड बैक्टीरिया है कहीं ना कहीं उसको कम कर देते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द हेल्थ टिप्स। Encourage hydration. Now if your body is hydrated well, a, you maintain temperature, b, your cells are hydrated. So hydration के ऊपर जरूर focus करिए, especially for the people who have got skin related issues. I very very strongly recommend that focus on your hydration. Now जब तक मुझे नहीं पता था, मेरे मेरे मुझे पता भी नहीं है, because I used to drink water only while having my food. So बाकी दिन मैं पानी पे ध्यान ही नहीं देता था। But now I realize that what is the important, because water helps maintain the health of the intestinal lining, which plays a critical role in nutrient absorption and immune function. Water also helps to flush waste and toxins from the body. Dehydration may affect digestion, leading to constipation, bloating, and other digestive related issues. And hydration plays a crucial role in supporting your gut health. So hydration is very, very important. एंगेज इन फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, जो हम फिजिकल जो गट मूवमेंट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द राइट द गट मूवमेंट। अगेन आई कनेक्ट इट टू द रिलीजियस प्लेसेस, बिकॉज अभी नवरात्रि खत्म हुई है। अभी आप जिसको भी फॉलो करते हो, अभी भी जब हम झुक के कोई मंदिर में या जहां पे भी हम ऐसे झुक के जब माथा टेकते हो, तो आप देखो कहीं ना कहीं हम गट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिस पोस्चर में हम झुकते हैं। सो गट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली पीपल who've got a sitting job these days, it is very important for them to focus on the gut movement. So आप अपने हेल्थ बडी के साथ कांटेक्ट करिए, दे विल टीच यू द राइट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, दैट अगर आप एक सिटिंग जॉब में भी हो, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग आईटी प्रोफेशनल हो, या आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ आप सुबह से शाम तक, बैंक में अगर आप कैशियर हो जहाँ आप उठ भी नहीं सकते थोड़ी देर के लिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन फोकस ऑन डूइंग द गट मूवमेंट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फिजिकल एक्टिविटी। Now, stress also creates a very significant impact negatively on our gut health. And जब gut health, आप अक्सर आप देखो, if you are stressful, you will feel something in your stomach, right? कुछ ऐसी होती है जो which will make you feel very very uncomfortable. So जो stress है, that create changes in the gut microbiota, एंड जिसके वजह से जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड ऑल्सो द इम्यून, जो आपकी इम्यूनिटी लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है। तो स्ट्रेस ऑल्सो प्लेस अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर गट हेल्थ, एंड दैट इज व्हाट कॉजेस the impact on our immunity and our other health related issues. The gut bacteria excess is a term for the communication network that connects your gut and the brain. So इसको हम gut brain एक्सेस, दिस टू ऑर्गन्स आर कनेक्टेड बोथ फिजिकली एंड बायोकेमिकली। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शंस में एक तरीके से बैरियर आ जाता है, एंड दैट कनेक्शन गोज फॉर अ टॉस। Now, you've understood the importance of the early dinner, because body
goes into the repair mode post sunset, and body cannot metabolize the food if we eat a late night dinner or even a night dinner probably. So but इसका एक पॉजिटिव साइड भी है. पॉजिटिव साइड ये है बिकॉज बॉडी रात भर बॉडी हैज गॉन इनटू अ मेंटेनेंस फेज, बॉडी हैज गॉन इनटू द रिपेयर फेज. so the morning nutrition becomes very very important and very very significant, because morning में जो हमारा metabolic rate है वो ड्रॉप रहता है. हमारा जो प्रोटीन बैलेंस है बॉडी का इन द मॉर्निंग इट इज नेगेटिव. एंड जो ऑल्ट्रेशन है इन द गट बैक्टीरिया वो भी आप देखेंगे कि इम्पैक्ट होता है. एंड योर इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लूकोज टॉलरेंस is also low because the body has gone into a repair mode in the evening. And if you're eating food, आप देखेंगे आपका शुगर वैल्यू हमेशा हाई आएगा. Especially people who are on the fasting mode, I always recommend that evening में जल्दी खाना खाओ, but morning focus on the right timing, because you should have your breakfast within 2 hours of getting up. And we need to also get up anything between around 6 o'clock के करीब उठ जाना चाहिए. So protein, fiber and probiotics, they play a very very important role in maintaining a good gut health, right? So आइए इसका डिटेल समझते हैं कि ये कैसे होता है. So जो प्रोटीन का रोल है, प्रोटीन इज मेड आउट ऑफ अमाइनो एसिड्स. एंड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारे गट इम्यून फंक्शन पे, वो गट इन्फ्लेमेशन को एड्रेस करते हैं. they generate the beneficial gut metabolites. So basically, it helps in developing the good bacteria. Gut mobility and secretion में वो help करता है and support the gut barrier. So अगर आप देखो तो protein plays a very very important role. And morning when you get up and if you start your day with a right set of protein breakfast, आपकी जो दिन भर की gut health है वो भी healthy रहती है. And you know it also impacts you very very positively in your overall health. Now, the second most important thing is dietary fiber. I mean, this is the most important thing, but kahin na kahin ignored uh, of all the nutrient ये बहुत ignored था. But because fiber में we just take a few cucumber here there और हमें लगता है हमारा fiber requirement body का पूरा हो गया. या हम कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, little bit of sprouts and some one serving of fruits, and we feel that it is enough for the body. And जो prebiotic hai, that is very very important, because dietary fiber is the most important thing which helps to maintain a right gut health. Now ये क्या करता है? Basically it improves your immunity and decreases risk of all types of allergy, uh, promotion growth of beneficial gut bacteria, enhance production of beneficial metabolites, improves nutrient absorption. ये nutrient absorption क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसे आप एक ग्राउंड में जानते हो घर के बाहर, और जहां से रात दिन पानी बहती है, थोड़ी देर में अगर आप देखोगे तो वो जो एरिया है वो एकदम स्लिपरी हो जाता है, मतलब वाटर विल जस्ट फ्लो. नाउ व्हाट इफ सपोज आपने एक स्टिक ले लिया और उस एरिया को थोड़ा सा रब कर दिया, मतलब थोड़ा सा ऐसे मिट्टी में. नाउ you'll see that soil has started absorbing some of the water. This is what exactly happens in our body, and the fiber plays that role of that little stick which creates that scrubbing type of a element in your intestine, because of which you see that the body will absorb the nutrient that it should absorb from the food. So ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट absorption में. And so fiber is the most important thing that we should focus on to maintain a healthy gut. Now, there are two types of fiber: water soluble fiber and water non soluble fiber. Thankfully, through this program, what we have a supplement is called Neutralite fiber, and it is a water soluble fiber. So, water soluble basically क्या करता है? It dissolves in water. It promotes satiety. नाउ ये क्या चीज़ है? वो जो हंगर क्रेविंग वाली चीज़ है, वो जो भूख लगने वाली चीज़ है, वो थोड़ा सा उसको एनहांस कर देता है, लॉन्गर कर देता है. और आप देखोगे जो आपके क्रेविंग्स है वो क्रेविंग्स आपके कम हो जाएंगी. इट हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, इट सपोर्ट द गट फ्लोरा, इट इम्प्रूव्स द ब्लड शुगर लेवल. फाउंड्स इन एप्पल बीन्स, ये वो चीज़ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ पाए जाते हैं. हेल्प्स फूड मूव थ्रू द गट एट जस्ट द राइट पेस, and feed, that is the food for the beneficial bacteria. So fiber basically क्या करता है? It is food for the good bacteria, and if the good bacteria is healthy in the body, as I again and again I'm saying, your overall health is great. And insoluble क्या करता है? Does not dissolve in the water, promotes laxation, supports intestinal health. Found in the whole wheat, leafy greens, tuna, brown rice and seeds, creates bulk in your stool, supports the bowel health.
Now, this is the overall cycle that the power of the probiotics, daily probiotics act as gut microbiota management tool. So basically ये क्या कर रहा है, आपके जो गुड बैक्टीरिया उसको इंक्रीज कर रहा है और बैड बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा है. So ये that's the role that it plays inside our body. Now, thankfully through this Neutralite, we have a product called pre and probiotic. Uh, in the pharma industry, it is very difficult to merge a pre and the probiotic. So बहुत ज़्यादा आपको choices मिलेंगे नहीं. Now basically ये क्या होता है, जो probiotic है, that is the food for your good बैक्टीरिया फूड है, और जो प्रीबायोटिक है वो प्रोबायोटिक को एनहांस करता है. सो प्रीबायोटिक इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक इज द फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया. दैट्स हाउ इट, सिंपल टर्म्स में दिस इज हाउ इट गोज. एंड अगर आप इसको देखेंगे नो, फॉर द पीपल हु आर ऑन द गट रीसेट प्रोग्राम, यू आर सपोज टू टेक दिस. आप अपने हेल्थ बडी से चेक करिएगा कि वो आपको कब रिकमेंड कर रहे हैं. एंड नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट विच हेल्प्स यू टू. सो प्रोटीन, फाइबर एंड प्रीबायोटिक, बेसिकली दिस थ्री का जो पैकेज है, ये आपके हेल्दी गट को हेल्दी रखने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है. एंड इट एनहांसेस द क्वांटिटी ऑन द गुड बैक्टीरिया इन अ गट एंड इट लोअर्स ऑन द बैड बैक्टीरिया. सो ये वो तीन प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था. नाउ प्रोटीन, थैंकफुली दिस ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर लाइक वेगन. एंड ये जो प्रोटीन है, दिस इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. जो ये फाइबर है, ये फाइबर यू नीड टू टेक वन स्कूप विद प्रोटीन, और आप इसको अलग से भी ले सकते हो. नाउ यू नो व्हाट इट डज इज, ये जो आपका पूरा गट हेल्थ है, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस within a say around 5 to 7 days time. जब आप इसको लोगे and you will find the difference. So this is a substitute of what we are not getting from the mother nature. और ये this is in the purest organic form जो आपको मिल रहा है, जो आप अपने फूड में इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं. Now some of the do's, right, जो हमें करना चाहिए, eat a diet rich fruits and vegetables basically. So what it does is, the more you are towards the plant, the more you are towards the mother nature, आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ स्पैन है वो आपके लाइफ स्पैन के साथ साथ जाएगी. Incorporate prebiotics. You know, it took almost two decades to understand the importance of protein. आज से कुछ साल में आप देखेंगे कि दिस बिकम्स अ वेरी वेरी दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पीपल्स हेल्थ. एंड अभी भी अगर आप देखिए, आप सिंपल चीज को देखिए, अगर लोग कितना ज्यादा जो मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन, कहीं ना कहीं उनका गट हेल्थ बहुत हेवीली कॉम्प्रोमाइज है. एंड सिर्फ अगर आप उनको यही चीज समझा दोगे, यू कैन क्रिएट अ बिग एडवांटेज फॉर द पीपल हु आर स्पेशली ऑन द मेडिकेशन थिंग, जो मेडिसिन लेते हैं. बिकॉज मेडिसिन से आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. And so, what are the other do? Stay hydrated by drinking enough water, exercise regularly, chew your food thoroughly before swallowing. हमने बचपन में सुना था कि 32 नहीं, some 36 times or 30+ times we should chew our food. जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, 3 to 4 times when my food was inside, like gone in, 3 to 4 times में, मतलब मैं फास्ट खाता था. बट chewing of the food, जो उसका जो वो चीज़ है, जब वो सलाइवा में मिक्स होता है, that is what it goes in your gut, and that's how your gut health is healthy. Manages stress through relaxation methods. So stress management भी आपको सीखने की जरूरत है, because it plays a very significant role in our health. Incorporate fiber rich foods in the diet, get enough sleep each night, eat preferably during daylight. um, One second, because of my photo I can't see that last line. Consume nutrient dense food, opt for the plant based food, give a gap of at least 2 hours, as Farooq rightly said, before the dinner and the bedtime. And the last slide, shine every day, because this program helps you to make the right choices. This program helps you to design a right health goal. uh, आज की तारीख में, especially in the last 4 years, if you see, the biggest importance that people have started giving is to the health. But there is a negative side of it also, because of the social media. हर कोई कुछ कुछ बोल रहा है. Now it becomes very difficult to make the right choices and to adapt to the right health goals. And thankfully through this program, under the mentorship of Farooq, you know ये बहुत रिसर्च बेस्ड सारी चीजें हैं. एंड इट गिव्स लाइक दैट कॉन्फिडेंस कि वंस यू हैव एनरोल ऑन दिस प्रोग्राम, you just don't have to think about, and your health buddies are going to help you to have a right health goal. And during in the next 30 to 40 days, you'll see that you will make some of the right choices, and those right choices will help you to have a great health. And then you can listen to your gut very strongly. So listen to your gut, give focus to your gut. And thank you very much. From my side, over to Deepika. Well, thank you so much, Raj. That was so simplified version, and I think
one thing that always comes out loud and clear is the passion with which each of these presenters present, how simplified it is, how relatable it is to your daily life. And we have Commander Vijay Vadera to share his excerpts with us. Good evening, sir. Please go ahead, unmute yourself. Yeah. Yeah, good evening. First of all, thanks, Farooq, for putting that right amount of kind of breakfast, Punjabi breakfast, to get that protein of 35 or 40. Though my wife didn't fully agree to it, but I suppose I'll be able to convince her with the help of Farooq that we need to change that thing. So my simple question is, which is the bigger evil, tea, coffee, or or, or both? If one feels like having that in the evening, which we Punjabis are so used to it, which is the bigger evil, or both are Both. as bad as each other? Yeah, both, sir. Both. I knew the answer, but if you have to drink one of them, which one is? I think if you have to drink, then you should reduce the quantity. Reduce the quantity. Achha, okay. See, what I notice is when people drink tea and coffee in mugs, and some of these mugs are nowadays quite big. They can even be 350, 400 ml. Okay, and you can have this. If you go to Italy, especially, and if you go to any cafe over there and order a coffee, the cup size is exactly this small. You can't drink more because that's like really solid coffee. You can't drink more coffee than that much. So they normally drink about 25 to 30 ml, and that's it. So you mean to say the Bombay ka cutting chai is the best? Well, Yeah. they can be a cup smaller than that. Yeah, by default, I think it has become a good choice out Okay. of economic constraints. But I think that is not a bad way forward. Okay. So reduce the quantity. I think that's the best option before you eliminate completely. Okay. Yeah. If you can drink water, nothing like it at that time. अरे यार पंजाबी उसका ऐसे नहीं होता ना वो गरम गरम सुड़कती हुई चाय is one thing which we are so used to it. Reduce quantity. Yeah. Especially from India days where you look forward to bunching, all that thing. Yeah, Yeah, the NDA mug was 500 ml, I remember. I know. And Mm. and with the pastries and all, we should gulp all the same. Okay. ठीक है. Thanks. I just wanted to thank you. I can see we don't have any other questions, so we can call it a day. Thank you so much, Raj, and thanks a lot, Farooq, once again. Ladies and gentlemen, we are moving forward with one and only one objective, which is Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. That's Farooq's vision for India, and I hope we can have more participants joining us on this program and taking this vision forward. You've been a great audience. We'll see you coming Friday. Till then, stay tuned, keep sharing your plates, and stay healthy. Good night, everybody.